Are you agree with me? Melasma and PIH can dim your self-confidence and radiate spirit. No, can see the चांदनी। हाँ जी पापा जी। क्या कर रही बेटा? कुछ नहीं पापा, बस बैठ के पढ़ रही थी। मैं सोच रहा था आज डिनर पे चलेंगे बाहर, कहीं चलते हैं रेस्टोरेंट पे, बढ़िया था, बहुत दिन हो गए। पापा मैं नहीं जाऊंगी, सब लोग मुझे देखते रहते हैं। अरे कुछ ना होगा, चल। नहीं पापा नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, तैयार होता, चल मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है पापा, चलते हैं, कोई बात। क्यों हम तैयार हो? अब तो मेरे दादी को देखते हैं। तू भी बेटा तैयार? हाँ जी पापा। चल 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 चलिए पापा। पापा चलो घर चलते हैं। कुछ खा लेते, थोड़ा सा क्या हो गया, डॉक्टर तेरे सबके हो जाए। पापा सब मुझे देखते हैं। बड़ा हुआ बच्चा प्रेजेंट हुआ, बस वही चल। क्या हो गया आपकी? देखो पापा, पापा देखो आपके, इन्होंने भी ये बोला मुझे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अरे कुछ नहीं बेटा, अभी तो दाग बचे, बस वही ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। दिखाया पता नहीं कितने डॉक्टर को दिखा लिया भाई साहब, परेशान हो गए। मैं डॉक्टर जानता हूँ, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार उनको दिखाइए। अरे जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है। चलिए आप मेरे साथ एक बार चल के देखिए, ठीक हो जाएगा। चलिए आपको भी सवाल लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। सर ये मेरे दोस्त हैं, इनकी बेटी है सर, काफी ज्यादा परेशान है सर ये। So don't worry, dear. This is very common problem. So first understand what is the hyperpigmentation. Hyperpigmentation in the simple words, it is the dark patches which occurs on our skin like this. So it may be a melasma, it may be post anti-inflammatory hyperpigmentation. So this is happens due to the excess secretion of the melanin with the by the cells of melanocytes. Hyperpigmentation, why it occurs? So a number of reasons are there. So first one is the UV lights. Second one is the hormonal changes in the body. After that, some of the skin injuries are there, and lastly the genetic factors also are there. So these are the factors because of that hyperpigmentation occurs. You should understand the mechanism of the melanin secretion. So how the actual mechanism of hyperpigmentation happens. Whenever these are some of the trigger factors are there, like UV rays, hormonal changes are there. So with the help of these trigger factors, so in the keratinocytes, the generation of the free radicals happens. So once the generation of free radical happens, it damages the DNA in the keratinocytes. So whatever the inactive form of the tyrosinase, which converts in the active form, and with the help of this enzyme, tyrosinase enzyme, so tyrosine is converted into the melanin. And once the melanin formation, which happens in the melanosomes, the melanosomes are which is present in the melanocytes, it gets transferred from melanocytes to the epidermal cells with the help of the keratinocytes, and then the black spots which occurs on our skin. These are the visible for us. Treatment for melasma and hyperpigmentation. Now, melasma treatment we having three therapies. First one we having for topicals and sunscreen, so photo protection. For second line therapy we having chemical peels, and third line therapy we having a laser and lights. For I think we having a mild acne or a mild melasma. So for that we can go with the hydroquinone, kojic acid, and ascorbic acid, and some other chemicals. And for severe and moderate melasma, we having a doublet combination therapy and the triple combination therapy. And then we have to maintain this therapy. For that we can use kojic acid, the glycolic acid, and the ascorbic acid also, and some other. And we can go with for hyperpigmentation therapy. That's it's a photo protection main. Okay, we have to use a broad spectrum sunscreen, and we have to cover with your body with a broad. Namaskar. अभी कैसा आपका प्रिपरेशन? How are you feeling now? Yeah, it's too good, sir. I am so confident, and my skin is so glossy and so clean. Okay, just maintain the therapy and follow the instructions. Apply sunscreen. अभी तो ज्यादा परेशान नहीं करते रहे। नहीं डॉक्टर साहब अब सही हो गया, बस ये है ठीक रहे, जैसे पहले वापस आता था अब तो ऐसा अभी नहीं आएगा, अभी मेंटेन करते रहो उसको। चलिए प्लीज, Yes. जो आप कहेंगे हम तो वही करेंगे। Yes, thank you so much. Thank you, sir. Unlock your natural glow. So, as you can see, suffering from the hyperpigmentation problem, but after using the product, you can see the result. Thank you so much, Cipla, for providing us wonderful products.